हेलो फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस सब्जेक्ट की हमने जो एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की है, इस एमसीक्यू की सीरीज के लेक्चर नंबर 6 में हम जिस टॉपिक के एमसीक्यू देख रहे हैं वो है टॉपिक नंबर 5 सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो इस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टॉपिक के टोटल 30 प्लस एमसीक्यू इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के जो 5 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एमसीक्यू के लेक्चर के वीडियोज हैं वो अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वो आप जरूर देख लें। और ये भी 30 प्लस एमसीक्यू हम विद एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। इसके ऑप्शन है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ऑप्शन बी यूनिट टेस्टिंग, ऑप्शन सी सिस्टम टेस्टिंग एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। There are 3 levels of the testing: integration testing, unit testing and system testing. Next question है, dash are those software mistakes that occur during the coding phase. इसके ऑप्शन है defects, ऑप्शन बी failures, ऑप्शन सी errors and ऑप्शन डी bugs. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी bugs. Bugs are those software mistakes that occur during the coding phase. Next question है, which of the following testing is related to the boundary value analysis. तो इसके ऑप्शन है white box and black box testing, ऑप्शन बी white box testing, ऑप्शन सी black box testing and ऑप्शन डी none of the above. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी black box testing. Black box testing is related to the boundary value analysis. Next question है, which of the following testing is also known as white box testing. इसके ऑप्शन है स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, ऑप्शन बी एरर गेसिंग टेक्निक, ऑप्शन सी डिजाइन बेस्ड टेस्टिंग एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्ट्रक्चरल टेस्टिंग. स्ट्रक्चरल टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which term is used to define testing. इसके ऑप्शन है evaluating deliverable to find error, ऑप्शन बी finding broken code, ऑप्शन सी a stage of all project and ऑप्शन डी none of the above. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए evaluating deliverable to find error. This term is called as the testing. Next question है, white box testing techniques are dash. इसके ऑप्शन है स्टेटमेंट कवरेज टेस्टिंग, ऑप्शन बी डिसीजन कवरेज टेस्टिंग, ऑप्शन सी डेटा फ्लो टेस्टिंग एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक आर स्टेटमेंट कवरेज टेस्टिंग, डिसीजन कवरेज टेस्टिंग एंड डेटा फ्लो टेस्टिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच एनवायरनमेंट वी कैन परफॉर्म द अल्फा टेस्टिंग. इसके ऑप्शन है यूजर एंड, ऑप्शन बी डेवलपर एंड, ऑप्शन सी यूजर्स एंड डेवलपर्स एंड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डेवलपर्स एंड. द अल्फा टेस्टिंग इज परफॉर्म एट डेवलपर्स एंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द बिलो इज नॉट पार्ट ऑफ टेस्ट प्लान. इसके ऑप्शन है शेड्यूल, ऑप्शन बी रिस्क, ऑप्शन सी इंसिडेंट रिपोर्ट एंड ऑप्शन डी एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इंसिडेंट रिपोर्ट. इंसिडेंट रिपोर्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेस्ट प्लान. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग. तो इसके ऑप्शन है डिजाइन एरर, ऑप्शन बी इंटरफेस एरर्स, ऑप्शन सी प्रोसीजर एरर्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन्ड. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इंटरफेस एरर्स. Interface errors is the key objective of integration testing. Next question है, which of the following is not a valid software testing technique. तो इसके ऑप्शन है inspection, ऑप्शन बी data flow analysis, ऑप्शन सी error guessing एंड ऑप्शन डी walk through. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी error guessing. Error guessing is not a valid software testing technique. Next question है, what is the best time to perform regression testing. तो इसके ऑप्शन है after the software has been modified, ऑप्शन बी as frequently as possible,
ऑप्शन सी when the environment has been modified, ऑप्शन डी both ऑप्शन ए एंड सी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बोथ ऑप्शन ए एंड सी। आफ्टर द सॉफ्टवेयर हैज बीन मॉडिफाइड एंड व्हेन द एनवायरनमेंट हैज बीन मॉडिफाइड इट इज द बेस्ट टाइम टू परफॉर्म रिग्रेशन टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्टिंग इज रेफर्स टू एज अ फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग टेक्निक। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए ट्रेस टेस्टिंग, ऑप्शन बी म्यूटेशन टेस्टिंग, ऑप्शन सी बीटा टेस्टिंग एंड ऑप्शन डी यूनिट टेस्टिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी म्यूटेशन टेस्टिंग। म्यूटेशन टेस्टिंग इज रेफर्ड एज अ फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग टेक्निक। Please like the video and subscribe the channel Code Learning for more MCQ videos. नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी इज अ डैश। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ऑप्शन बी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ऑप्शन सी ग्रे बॉक्स टेस्टिंग एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज अ साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द टेस्ट टाइप। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए फंक्शन टेस्टिंग, ऑप्शन बी सिस्टम टेस्टिंग, ऑप्शन सी स्टेटमेंट टेस्टिंग एंड ऑप्शन डी डेटाबेस टेस्टिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी स्टेटमेंट टेस्टिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेस्ट टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टेस्ट डॉक्यूमेंट इज यूज्ड टू डिफाइन द एग्जिट क्राइटेरिया ऑफ टेस्टिंग। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए डिफेक्ट रिपोर्ट, ऑप्शन बी टेस्ट समरी रिपोर्ट, ऑप्शन सी टेस्ट केस एंड ऑप्शन डी टेस्ट प्लान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी टेस्ट प्लान। टेस्ट प्लान इज डिफाइन द एग्जिट क्राइटेरिया ऑफ टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पैक्ट एनालिसिस हेल्प्स अस टू डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्टिंग। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए एग्जिट क्राइटेरिया, ऑप्शन बी हाउ मच रिग्रेशन टेस्टिंग शुड बी डन, ऑप्शन सी different tools to be perform regression testing and option D how many more test case need to write। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी how much regression testing should be done। नेक्स्ट क्वेश्चन है which testing technique is used for usability testing। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ऑप्शन बी ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, ऑप्शन सी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड ऑप्शन डी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज यूज्ड फॉर यूजेबिलिटी टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर द प्रॉब्लम्स दैट थ्रेटन द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट बट व्हिच हैज नॉट येट हैपन। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए रिस्क, ऑप्शन बी बग, ऑप्शन सी फेल्यूर एंड ऑप्शन डी एरर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रिस्क। Risks are the problems that threaten the success of the project but which has not yet happened. Next question is in which environment we can perform the beta testing। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए यूजर्स एंड डेवलपर्स एंड, ऑप्शन बी डेवलपर्स एंड, ऑप्शन सी यूजर्स एंड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यूजर्स एंड। बीटा टेस्टिंग इज परफॉर्म एट यूजर्स एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एरर गेसिंग इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए टेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट टेक्निक, ऑप्शन बी टेस्ट वेरिफिकेशन टेक्निक, ऑप्शन सी टेस्ट एग्जीक्यूशन टेक्निक एंड ऑप्शन डी टेस्ट केस डिजाइन और डेटा मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी टेस्ट केस डिजाइन एंड डेटा मैनेजमेंट टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर व्हिच फेज we can proceed to the white box testing। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए आफ्टर द कोडिंग फेज, ऑप्शन बी आफ्टर द डिजाइनिंग फेज, ऑप्शन सी आफ्टर एसआरएस क्रिएशन एंड ऑप्शन डी आफ्टर द इंस्टॉलेशन फेज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आफ्टर द कोडिंग फेज we can proceed the white box testing। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is not another name of white box testing। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, ऑप्शन बी बिहेवियरल टेस्टिंग, ऑप्शन सी ग्लास बॉक्स टेस्टिंग एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बिहेवियरल टेस्टिंग।
behavioral testing is not another name of a white box testing. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म फेल्यूर. इसके ऑप्शन है a human action that produces an incorrect result. Option B, its departure from specified behavior. Option C, found in the software the result of an error. And option D, it is a procedure or a data definition in a computer database. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इट्स फ्रॉम स्पेसिफाइड बिहेवियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the below testing is related to non functional testing. इसके ऑप्शन है यूनिट टेस्टिंग, ऑप्शन बी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ऑप्शन सी परफॉर्मेंस टेस्टिंग एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, परफॉर्मेंस टेस्टिंग is related to non-functional testing. Next question है which of the below testing is related to black box testing. तो इसके ऑप्शन है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, ऑप्शन बी कोड पाथ एनालिसिस, ऑप्शन सी बेसिक पाथ टेस्टिंग एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस is related to black box testing. Next question है which of the following testing is also called acceptance testing. इसके ऑप्शन है बीटा टेस्टिंग, ऑप्शन बी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ऑप्शन सी ग्रे बॉक्स टेस्टिंग एंड ऑप्शन डी अल्फा टेस्टिंग. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बीटा टेस्टिंग. बीटा टेस्टिंग इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है dash testing is used to check the code. इसके ऑप्शन है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, ऑप्शन बी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ऑप्शन सी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ऑप्शन डी रेड बॉक्स टेस्टिंग. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज यूज्ड टू चेक द कोड. नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिग्रेशन टेस्ट केस इज नॉट अ dash. इसके ऑप्शन है test that focus on the software components which have been modified. Option B, low level components are combined into cluster which perform a specific software subfunction. Option C, additional tests that emphasize software functions which are likely to be affected by the change. Option D, a representative sample of a test which will exercise all software functions. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, low level components are combined into clusters which perform a specific software subfunction. Next question है which of the following statement is used to discover error in the test case. ऑप्शन ए, incorrect logical operators or precedence, ऑप्शन बी non-existent loop termination, ऑप्शन सी कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नॉन एग्जिस्टेंस लूप टर्मिनेशन. और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है व्हेन वी हैव टू स्टॉप द टेस्टिंग. इसके ऑप्शन है द फॉल्ट हैज बीन फिक्स्ड, ऑप्शन बी ऑल टेस्ट आर रन, ऑप्शन सी द टाइम कंप्लीटेड एंड ऑप्शन डी द रिस्क इज रिजॉल्व्ड. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, द रिस्क इज रिजॉल्व्ड, देन वी स्टॉप द टेस्टिंग. तो इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए. आप जो चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू.